गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना दिया है, जिससे कि टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट्स की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलेगा। तो इसमें होगा क्या कि ये फोकस रखेगा कि टर्मरिक ग्रोअर जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे कैसे की जाए। बोर्ड जो है वो क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी ध्यान देगा। बोर्ड के जो चेयरपर्सन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसमें मेंबर्स जो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, कमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं वो सब रोटेशन बेसिस पर इसके मेंबर बनते रहेंगे। जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, वो भी इसके जो है मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है ऑफ कोर्स इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा। टर्मरिक के बारे में देखें, एक पेरेनियल मतलब 12 महीने मिलने वाला हर्ब है। जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है ये ऑफ कोर्स। और इसको सॉइल और क्लाइमेट चाहिए होता है, रेड लोमी सॉइल चाहिए होती है, और वेट गार्डन लैंड्स चाहिए होते हैं। ट्रॉपिकल कंडीशंस आइडियल होती हैं इसके लिए। रेन इसको लगभग 1500 मिलीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री का चाहिए होता है। और ख़ासकर अगर हम देखें तो ये टर्मरिक है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के एरिया में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब हम देखते हैं याक चर्पी। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, जब यहाँ पर याक चर्पी या याक चुरपी उसको जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है उसके याक मिल्क प्रोडक्ट को। तो याक चर्पी एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि इंडिजिनस अरुणाचल की याक ब्रीड से जो है वो लिया जाता है। ट्राइबल याक पेस्टोरलिस्ट जो हैं, ब्रोकपास कहते हैं इनको अरुणाचल में, वो इसको रेयर करते हैं। वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट जो हैं स्टेट के, वहाँ पर ये याक्स पाई जाती हैं। प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इनके डेयरी प्रोडक्ट्स में, और ये एक एसेंशियल डाइटरी स्टेपल है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वहाँ पर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरुणाचली जो याक हैं वो अकेली ऐसी रजिस्टर्ड याक ब्रीड है जो कि इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रीडम हाउस रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम जो है वो डिक्लाइन हुई है 13th कंसेक्यूटिव ईयर में। फ्रीडम हाउस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वाशिंगटन डीसी बेस्ड, पॉलिटिकल एडवोकेसी है बेसिकली। और इन्होंने जो है 70 कंट्रीज़ को इवेल्युएट किया है 5 सेंसरशिप मेथड्स के बेसिस पर। और अगर हम मेजर फाइंडिंग्स देखें तो जो इन्वायरमेंट है ह्यूमन राइट्स का ऑनलाइन वो डिटीरियोरेट हुआ है 29 कंट्रीज़ में। चाइना जो है वो वर्ल्ड की वर्स्ट इन्वायरमेंट की कंट्री है इंटरनेट फ्रीडम्स में। और म्यांमार ऑफ कोर्स सेकंड मोस्ट रिप्रेसिव है। डिजिटल रिप्रेशन जो है वो इंटेंसिफाई हुई है ईरान में भी अभी रिसेंटली। और अगर हम देखें इंडिया के बारे में, इनका क्या कहना है कि इंडिया जो है वो लगभग हर तरह के सेंसरशिप मेथड को अपनाता है एक्सेप्ट वीपीएन ब्लॉकिंग। इंडिया का स्कोर 1 और 100 के बीच में जो है वो 50 है। ठीक है, अब अगर हम देखें टॉप पर तो आइसलैंड जो है वो सबसे एक इंटरनेट फ्रीडम वाली कंट्री है जिसका स्कोर 94 है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुरेवेस्टेक्निक मिसाइल। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने रिसेंटली कहा है कि रशिया ने सक्सेसफुली बुरेवेस्टनिक मिसाइल जो है टेस्ट किया है। ये मिसाइल एक यूनिक मिसाइल है क्योंकि ये क्रूज मिसाइल तो है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैपेबल मतलब कैरी कर सकता है, लेकिन ये सबसे यूनिक इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड भी है। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रिक्ट 6 स्ट्रेटजिक वेपन्स हैं ये रशियन प्रेसिडेंट ने जो 2018 में इंट्रोड्यूस किए थे। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको पावर करेगी तो इसका मतलब ये पूरे वर्ल्ड को कई बार जो है वो एक चक्कर लगा सकता है। तो इसीलिए इसकी रेंज भी लगभग 22,000 किलोमीटर कही जा रही है। इंटर कॉन्टिनेंटल या रादर अर्थ का पूरा चक्कर भी लगा सकता है ऑलमोस्ट। और ये एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा पावर होगा जिससे कि मिसाइल जो है ये प्रोपेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया है ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। तो ये एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है
जो कि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स है ये नाइट स्काई में। सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी गई हैं AST स्पेस मोबाइल कंपनी द्वारा। अब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं, जो टुगेदर एज अ सिस्टम काम करती हैं, और ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राउंड स्टेशंस को जो है वो केटर करती हैं, और उसके थ्रू ही जो है इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इच्छामती रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट या जोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स जो है, उन्होंने ड्रेजिंग वर्क नेशनल वाटरवेज 44 में जो है इच्छामती रिवर पर जो है वो इनाग्रेट किया है वेस्ट बंगाल में। इच्छामती रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि इंडिया और बांग्लादेश से फ़्लो होती है। जो इसका लॉन्गर पार्ट है वो माथाबंगा रिवर में फ़्लो होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा रिवर की, और ये जाके कालिंदी रिवर को हसनाबाद नॉर्थ 24 परगनाज में जाकर ज्वाइन करती है। अब नेशनल वाटरवेज क्या है? नेशनल वाटरवेज आपको पता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 111 वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। नेशनल वाटरवेज इनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ये प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, और इनका जो हेड ऑफिस है जो इनकी अथॉरिटी का, वो नोएडा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन के साथ, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वाघनाक मतलब टाइगर क्लॉ था वो स्टेट में वापस लाया जा सके। तो छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता है फरवरी 1630 में बॉर्न हुए सिटी ऑफ जुन्नार में, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। शिवाजी ने एक एनक्लेव जो है अपना क्रिएट कर लिया था आदिल शाही सल्तनत ऑफ बीजापुर से। उनके ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपना एक एम्पायर बना लिया। इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले रियलाइज़ किया था कि एक नेवल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इनको माउंटेन रैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने गेरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो ये सेक्युलर रूलर थे। इनकी जो है प्रजा में हर तरह के धर्म के लोग थे, विमेन के और सपोर्टर थे, डिपेंडेबल सपोर्टर थे। सबसे फेमस इनके हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हम अष्ट प्रधान कहते हैं, ठीक है, जो इनको एडवाइस देने के लिए बनाए गए थे। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Turmeric Board. This topic is important for your economy section. Recently, Government of India has notified the constitution of the National Turmeric Board. Now, this board is going to focus on development and growth of turmeric and turmeric products in the country. This will focus on capacity building and skill development of turmeric growers. This board will also promote quality and food safety standards, and it will ensure that these standards are being adhered. This board shall have a chairperson who will be appointed by the central government. It will also have members from Ministry of Ayush, Department of Pharmaceuticals, Agriculture, Farmers Welfare, Commerce and Industry, and all of these are of course part of union government. So it will also have select national and state institutions who are involved in research, and they are representatives of turmeric farmers and exporters. It will also have a secretary who will be appointed by the Department of Commerce. So of course Ministry of Commerce will be the nodal department who will be providing funds and infrastructure for the National Turmeric Board. So if we look at turmeric, then it is a perennial herbaceous plant which belongs to the ginger family. It has a well drained red loamy soil in wet or garden lands. It can be grown in regions receiving an annual rainfall of 1500 millimeters. The temperature can range between 20 to 35 degrees Celsius. The largest producing states of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. So the next topic is Yak Churpi. This topic is important for your economy section. So in a significant milestone for northeastern state of Arunachal Pradesh, so the unique and culturally significant yak milk product called the Yak Churpi has been granted the geographical indication tag. So this Yak Churpi is basically a dairy product which is made from the milk of indigenous Arunachali yak breed, and it is reared by tribal yak pastoralists known as Brokpas. So these yaks are primarily found in West Kameng and Tawang districts of state. So Churpi is a naturally fermented dairy product and it is rich in protein content. So it is an essential dietary staple for tribal communities, and
Arunachali yaks are the only registered yak breed in India. So the next topic is Freedom House reports findings. This topic is important for your international relations and social issues both. So according to a new report by Freedom House, the global internet freedom has declined for the 13th consecutive year. So what is this Freedom House? Freedom House is a non-profit organization based in Washington DC. It is best known for its political advocacy around democracy, political freedom, and human rights. So it has recently evaluated internet freedom in 70 countries, which account for almost 88% of internet users in the world. And this report has evaluated countries on 5 censorship models. First, of course, is internet restrictions, block on social media platforms, block on websites, block on VPNs, and forced removal of content. So, if we look at the major findings of this report, then environment for human rights online has deteriorated in 29 countries, and only 20 countries registered net gains. China is, of course, the world's worst environment, having the worst environment for internet freedom. Myanmar stands at second. So digital repression has been intensified in Iran. So that's why the sharpest rise in digital repression has been witnessed in Iran, in the report also. Okay, so if we look at the findings with respect to India, then India has engaged in all forms of censorship except one, that is VPN blocking. India's score is 50, that is in midway between 1 and 100, and the worst, of course, is will be the 1, but India is at the middle as per this index. And on the other hand, Iceland is having 94 in score, which means that it is having the best climate of internet freedom in the world. So the next topic is Burevestnik missile. This topic is important for your security section. The Russian president has recently claimed that Russia has successfully tested the Burevestnik missile. So this missile is basically a ground-launched, low-flying cruise missile, which is not just having the capability to carry a nuclear warhead, but it is also nuclear powered. So this missile is one of the 6 strategic weapons which was announced by Russian president in 2018. This nuclear energy in this missile could let it fly around the world several times before hitting the target. So it is powered by a small nuclear reactor which heats up the air to propel the missile forward. So the nuclear propulsion gives this missile much longer range. So it has a range of about 22,000 kilometers. Okay. So it is also designed to fly at low altitudes. Okay, and it is because it can fly at low altitudes, and it is a cruise missile. It makes it very hard for air defense radar to detect it. Okay, so the next topic is Blue Walker 3 satellite. This topic is important for your science and tech section. Recently, an international team of scientists have published a paper detailing the impact of prototype Blue Walker 3 satellite on astronomy. So it's a prototype satellite which is part of the satellite constellation planned by its owner AST Space Mobile. It was one of the brightest objects in the night sky, and it was launched in September 2022. It is the largest ever commercial communications array deployed in low Earth orbit. Basically, it is meant for communications. Okay, so what is a satellite constellation? So it is a group of artificial satellites which together work as a system. Like we have a Starlink satellite system, which is owned by Elon Musk, SpaceX. Okay, similarly, these satellites are placed in orbits, complementary orbital planes. They connect themselves to globally distributed ground stations, and they are used for inter-satellite communication also. So the next topic is Ichamati River. This topic is important for your uh, environment section. Recently, Minister of State for Ports has inaugurated the dredging work at National Waterways 44, Ichamati River in West Bengal. So it is actually Ichamati River is a transboundary river which flows through India and Bangladesh both. It acts as a boundary between these two nations. So it is now in 3 parts. The longer part flows from Mathabanga River, a distributary of Padma, and afterwards it flows for 208 kilometers to join the Kalindi River near Hasnabad.
and Debhata. This Ichamati River and its tributary form a large oxbow lake complex also. So what are these national waterways? So to promote inland water transport in India, 111 waterways have been identified as national waterways under the National Waterways Act of 2016. So the Inland Waterways Authority of India is undertaking these projects for development and maintenance of the infrastructure related to it on national waterways. So the head office of this authority is at Noida. Okay. So the next topic is Chhatrapati Shivaji Maharaj. This topic is important for your art and culture section. So Maharashtra's Cultural Affairs Minister has recently signed an MOU with Victoria and Albert Museum in London to bring back Chhatrapati Shivaji Maharaj's legendary Wagnak, that is the tiger claw, to the state. So, if we look at Chhatrapati Shivaji Maharaj, he was the founder of Maratha Empire, and he was born in February 1630 near the city of Junnar, that is in Pune district, Maharashtra. He is known for his great valor and administrative skills. He carved out an enclave for himself, for the people, rather, from the declining Adil Shahi Sultanate of Bijapur. He became the genesis. Then this enclave became the genesis of Maratha Empire. So after establishing his rule, he implemented a competent and progressive administration. He had a disciplined military and well-established administrative setup. He is also known as the father of Indian Navy because he was the first to realize the importance of having a naval force. So he also established a strategic navy at the and a fort at the coastline to defend the Konkan side of Maharashtra. He is also called the Mountain Rat because he was known for his guerrilla warfare tactics, and he was very famous for his awareness of geography of his land and guerrilla tactics like the raiding, ambushing, and surprise attacks on his enemies. He was a secular ruler and he was very accommodative of all other religions. He was a dependable supporter of women and their honor, and his council of ministers, the Ashtapradhan, was meant to advise him, but of course their advice was not bound by, but he was not bound by their advice. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.